about a very important topic, that is non-cooperation movement. Now, I hope you all are aware that if you have seen the previous year question of CLAT, in the last 2 years, we have seen 2 occasions where they had asked questions on modern Indian history. So they are asking questions from these topics also. And that is why I have found it important to discuss non-cooperation movement. Earlier, I had discussed about Rowlatt Satyagraha. I had discussed about Gandhiji's return back to India. And he came back to India. About Champaran Satyagraha, we had discussed. Jallianwala Bagh Massacre. So these things we had earlier discussed. So let us begin with today's class with non-cooperation movement. So am I audible, visible? If everything is fine, please write yes in the comments. Yes. Good afternoon, guys. My voice is clear. अच्छा, एक important announcement है. If you have not subscribed to the channel, first subscribe to the channel. As today at 6 p.m. we'll be having a class, 6 months to CLAT. So this class will be taken by Ayushi ma'am and Govind sir. Okay. So both will be there live. So please do join live at 6 p.m. today. If you have any doubt, any question to ask, sir, कब mock test दें, कितना दें, नहीं समझ में आ रहा, ये वाला नहीं समझ में आ रहा. So there are a lot of questions. होता है सारे बच्चे के दिमाग में कि सर मेरा ये वाला सब्जेक्ट कमजोर, ये वाला ज्यादा अच्छा है, क्या करें क्या नहीं करें. Whatever is the problem, I'm not able to solve the mock या कितना mock test पूछे. कई बार बच्चे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछते हैं, सर एक दिन में कितना मार्क्स दें, कितना दें, इतना मार्क्स आ रहा है, इतना ठीक है कि नहीं है. So whatever your problem is, please do ask. Join it at 6 p.m. live today. Govind sir and Ayushi ma'am will be taking the class today. ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा 6 बजे. तो उसमें जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप पूछ सकते हो वहां. ठीक है, सो डू जॉइन देयर. ओके, on the same YouTube channel, go to the live section. And हम लोगों ने ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट क्लास ली है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड. एक है ये रॉलेट एक्ट वाली, प्लीज गो एंड वॉच इट. और इससे पहले नीचे जाना और you will get it about Gandhiji Satyagraha. So when Gandhiji came back from South Africa, what was his first Satyagraha? What was his first All India Satyagraha? Okay, please write me in the comment section what was the Gandhiji's first Satyagraha in India and in which year. इस क्लास में मैंने बताया है. These are very important. Nowadays they are asking questions. बताइए. Yes, very good. Champaran 1917, Gandhiji's first Satyagraha. And yes, Bihar, right? Priyanshi, Sambhav Sharma, you are right. And what was Gandhiji's first All India Satyagraha? Then what should be the answer? Indigo workers are related. Champaran. So this Champaran Satyagraha was the first Satyagraha of Gandhiji related with indigo. Hai na? First All India Satyagraha, if I'm asking, yes, first All India Satyagraha was Rowlatt Satyagraha, right? This we had discussed it earlier. Okay. So now today we'll be discussing about non-cooperation movement. Okay. Now let me show you why I have to convince you also that why I'm discussing history topic for CLAT, because आप देखो ये question आया था 2025 में. They talked about civil disobedience movement and a round table conference, civil disobedience movement. देखो यहाँ पे है ना, which is Gandhi March and all. So tomorrow we'll discuss civil disobedience movement also. ठीक है, तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसको भी, civil disobedience movement. Then जलियांवाला बाग में से क्या, this is also a history question, है ना, history topic. इस पर मैंने क्लास ऑलरेडी ले लिया है. If you have not watched it, go and watch this one. Here I have discussed इस passage पूरा मैंने discuss भी किया है ना. Question related with this passage I have discussed also. Then एक और question आया था, this was related with Constituent Assembly debates and all, the speech of Dr. Ambedkar. So they are asking questions from the history also. ठीक है. So that is why I have decided that अगर मान लो कि next time भी अगर उन्होंने उसी पैटर्न को फॉलो किया और एक जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे लास्ट ईयर दिया, इस साल हो सकता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे दे दे, मे बी. ठीक है, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली whatever they are actually asking, है ना, उसी हिसाब से पढ़ेंगे ना, उसी हिसाब से we are planning our preparation. So let us begin with non-cooperation movement. So the first question is in front of you. Please read it and then answer me. And I think it is the easiest question of the day. In which year non-cooperation movement was started? 1920, 1921, 1922, 1924. What is the right answer to this question? Let me see how many of you can answer.
I am yet to get a right answer. Right answer is 1920. A is the right answer to this question. Okay. So it was started in September 1920 by Gandhi ji, है ना? Okay. और इसका जो है ना रॉलेट एक्ट के बाद it has some relation with that, है ना? So I'll explain, discuss it in detail. Okay. The whatever happened in Rowlatt Act and Jallianwala Bagh massacre. After that, I mean, the next year non-cooperation movement was started by Gandhi ji in September 1920. Okay, that is what you should be knowing about. कहीं कहीं पे 1990 लिखते हैं, but the most perfect answer is 1920 से 22 तक था non-cooperation movement. That is what you should be knowing about. A is the right answer to this question. Yes, Adrija, now you were right. A is the right answer. Now let's move on to the next one. Yes, dog lover, you are also right. A is the right answer. Let's move on to इस तरह का passage आता है ना. They are actually giving this type of passage in the exam, and they expect you to answer it. So please read it and then answer me. सिर्फ एक काम ये क्या मैंने ऑप्शंस नहीं दिया है because it will become slightly easy, but okay, no problem. In the examination hall you will get the options. ठीक है, पहले आप कोशिश करो आंसर करने की. If you're not able to answer, then I will give you options. Yes, very good. Priyanshi, Sambhav Sharma, Adrija, Vineet, Podar, you all are right. So what happened was the annual session of the Indian National Congress, December 1920, approved in the X district, that is Nagpur district in Maharashtra. It was presided over by C. Vijay Raghavacharya. It was during this session that INC passed the main resolution as non-cooperation movement. So, okay, and it included boycott of foreign goods to schools and courts, the surrender of titles, etc., Hindu-Muslim unity, and appointment of 15-member Congress Working Committee, CWC कहते हैं इसको. So this is what we are talking about is option D, Nagpur session of the Indian National Congress. ठीक है? So this you should be knowing it. अच्छा, इसमें एक clarification और ये है कि सितंबर 1920 में start हो गया था movement. Non-cooperation movement was started in September 1920. तो उस वक्त इंटरिम सेशन हुआ, मतलब एक तरह से मतलब 1920 में कलकत्ता सेशन इंटरिम मतलब सेशन हुआ, या स्पेशल सेशन में डिक्लेयर कर दिया गया कि वी विल स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. बट फाइनल अप्रूवल जो हर साल ईयरली दिसंबर में होता है, तो उसमें किया गया नागपुर सेशन में. देखो होता क्या, आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन. I will maybe in the next week I will schedule a class for ILC, Indian National Congress also, because yes, Indian National Congress about the history, like about the freedom movement and all, उससे related. ठीक है. So आपको पता होना चाहिए कि every year there used to have session, and mostly the session used to happen in December every year. Mostly I am saying, कुछ exception है, but हर साल दिसंबर में ही session होता था. And it was on rotation basis कि आज नागपुर में हुआ, कल मुंबई में हुआ, next day किसी और जगह हुआ, like that. ठीक है. So जब कांग्रेस ने जब डिक्लेयर किया कि let's start a non-cooperation movement in September 1920, तो सितंबर में तो कोई सेशन होता नहीं था. तो स्पेशल सेशन में, कलकत्ता स्पेशल सेशन में they declared, and that was led by लाला लाजपत राय. ठीक है. लेकिन ये स्पेशल सेशन था, फुल फ्लैश सेशन नहीं था. The full fledged session which was supposed to happen in December, तो finally दिसंबर में जो full fledged session हुआ नागपुर में 1920, and it was presided over by Mr. C. Vijay Raghavacharya. They actually finally declared, okay, we are approving the non-cooperation movement. ठीक है. So that is what you should be knowing about. ठीक है. तो इतना आपको पता होना चाहिए. I have taken this from Ministry of Culture's website. This. ठीक है. Okay, let's move on further. है ना? Which of the following was not the demand of non-cooperation movement? देखो जब भी एग्जाम में not लिखा हुआ है, you have to read it very carefully. Okay. बिकॉज यहाँ पे तो मैं अंडरलाइन कर दूंगा. एग्जाम में जो अगर नॉट अंडरलाइन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपको खुद से देखना है, पढ़ना है और अंडरलाइन करना है. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द एग्जामिनेशन हॉल. Let me see how many of you can answer.
I'm very sorry, I'm yet to get the answer, right answer. मैं थोड़ा सा और इंतजार कर रहा हूँ, शायद कोई सही आंसर लेके आ जाए. Yes, Shreya Reddy, Vineet Poddar, you are right. The right answer is अच्छा. Swaraj was 1929 Lahore session. Priyanshi. Okay, I'll clarify that. ठीक है. Adrija Harshama. Now you are right. The right answer is D is the right answer. ठीक है. Priyanshi, what you are saying, it is called as Purn Swaraj. ठीक है. Purn Swaraj means complete independence. This resolution was passed in Lahore session 1929. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ स्वराज लिखा है. इनफैक्ट स्वराज का गोल 1905 1906 से ही कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू कर दिया था. ठीक है. स्वराज मींस अ सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ रूल. इस पे हो सकता है 100% क्लैरिटी नहीं हो, बट इसको सेल्फ रूल ही टाइप थिंग होती है. ठीक है. पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी एकदम ब्रिटिश पूरी तरह चले जाओ. दैट इज द आइडिया ना. सो यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर. सो दैट वाज द गोल. सेकंड वाज रेस्टोरेशन ऑफ खिलाफत इन जजीरतुल अरब. ये स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी बुक में. व्हाट इज दिस? This term is mentioned in NCERT class 12. मैं देखना चाहता हूं आप कितना अच्छे से पढ़े हो क्लास 12 की बुक. जजीरतुल अरब का मतलब क्या होता है? This term is mentioned. I'll show you from the NCERT book. ताकि आप ट्रस्ट करो. मतलब हाँ, क्लास 12 की आई थिंक चैप्टर नंबर 11 is there. What is जजीरतुल अरब? So नॉट पूछा जा रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट नॉट है, बाकी तीनों करेक्ट है. ठीक है. All these three were the reasons for non-cooperation movement. Treaties that were threatened, captured, initially broken away from Ottoman Empire. Right, Shreya Reddy, very good. Khilafat, हाँ, leader after Turkey was defeated. हाँ, तो भी नहीं 12th में. ओके, अभी तक नहीं पढ़ा. Mentioned the highest position. देखो, खिलाफत इज द रूलिंग रूल. जजीरतुल अरब का मतलब होता है, जजीरा का मतलब होता है, देखो मैं बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन दिस बिकॉज मैं थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. जजीरा का मतलब क्या होता है, खिलाफत का मतलब क्या होता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये तो गांधी जी अगेंस्ट हैं. गांधी जी was against separate electorate to depressed classes. के लिए गांधी जी ने पुणे पैक्ट, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, गांधी जी फास्ट ऑन सैट एंड टू डेथ. ठीक है. सो डी यू शुड बी नोइंग कि सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट थे. गांधी जी नेवर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस. ठीक है. सो वी विल डिस्कस अबाउट पुणे पैक्ट एंड ऑल इन फ्यूचर क्लासेस. वी विल डिस्कस इट. ये तीनों गोल था. ठीक है. अब मैं देखो, ये स्वराज तो समझियो सेल्फ रूल टाइप की चीज है कि कुछ हमको इंडिपेंडेंस, पार्शियल इंडिपेंडेंस टाइप दो, है ना. At least justice for Jallianwala Bagh massacre, we had discussed Jallianwala Bagh massacre. इसमें हुआ ये था अप्रैल 1919, 13th April 1919 massacre happened. So the demand was that the punishment should be given to those who were involved in Jallianwala Bagh massacre. है ना. इंसाफ दीजिए उनको जिन पे जो जालिम थे, जिन्होंने जुल्म किया. those were the oppressors. इसको थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा because of course this needs little detail. ठीक है. खैर, the right answer is D. Okay. तो हाँ, तो ये प्रोमिनेंट था. अब देखो, ये है चैप्टर महात्मा गांधी द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड. चैप्टर 11 है क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक. ठीक है. ओके. नाउ सी इट. उसमें उसी चैप्टर में से स्टेटमेंट है और यहाँ पर लिखा होगा जजीरतुल अरब. ओके. सो आई विल एक्सप्लेन इट व्हाट एग्जैक्टली इट इज बिकॉज़ दिस इज इंपॉर्टेंट. पहले आपको एक चीज समझना होगा. व्हाट इज पेनिनसुला? पहले ये बताओ तो. एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? यहां तक अभी नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं कृषि सचदेवा. आई विल एक्सप्लेन दिस, तो आपको आसान भी होगा एनसीईआरटी पढ़ने में. ठीक है. तो मैं ये बता दूंगा तो चैप्टर आपके लिए समझेगा. हाँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुला? सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. यस, कृषि सचदेवा, राइट. हाँ. एंड लार्जेस्ट पेनिनसुला पूछ नहीं, लार्जेस्ट पेनिनसुला पूछ रहे हैं प्रियांशी. लार्जेस्ट डेल्टा नहीं. आई एम नॉट आस्किंग लार्जेस्ट डेल्टा और मैंग्रोव. पेनिनसुला मतलब होता है the land surrounded by water from 3 sides. जैसे इंडियन पेनिनसुला हो गया, 3 तरफ वाटर है. अरबियन पेनिनसुला, इसको कहते हैं अरबियन पेनिनसुला, इधर इधर एंड इधर वाटर है. ठीक है. so the in geography we use the word peninsula which means a land surrounded by water from 3 sides. लेकिन जब आप विकिपीडिया पे जाओगे, इसका मीनिंग देखोगे, इसका मीनिंग क्या लिखा रहेगा? ऑलमोस्ट एन आइलैंड. पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट एन आइलैंड.
बिकॉज अगर चारों तरफ पानी से घिरा होता तो आइलैंड होता, एक तरफ से नहीं घिरा हुआ है. यू गॉट इट? So if a land is surrounded by three sides, it is called as peninsula. If it would have been surrounded by 4 sides, it was an island. So the term peninsula means almost an island. Okay? In Arabic, jazira means island. Jazira का मतलब island होता है. But here they refer to the peninsula also. Why? Because island and peninsula is almost an island type thing, है ना? तो लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड इज अरबियन पेनिनसुला. ये ज्योग्राफी का बहुत फेमस क्वेश्चन है. लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड इज अरबियन पेनिनसुला. अब देखो समझो, जजीरतुल अरब का मतलब इस जमीन की बात हो रही है. व्हेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड जजीरतुल अरब. ओके, यू गॉट इट? दिस वर्ड इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी बुक एंड दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट. ठीक है, बिकॉज़ वो एनसीईआरटी से एग्जाम में जो क्लैट में पैसेज दे रहे हैं वो एनसीईआरटी के उठा के दे रहे हैं उसमें से. ठीक है, अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. ओटोमन एम्पायर क्या है? देखो, टर्की बेस्ड एक एम्पायर था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, है ना? इस रफली आई एम मेकिंग दिस. ये मान लो ये ओटोमन एम्पायर था. इसका कुछ हिस्सा इनफैक्ट अरब में भी था. ठीक है, दिस वाज कॉल्ड एज ओटोमन एम्पायर एंड द लीडर वाज कॉल्ड एज खलीफा और कैलिफेट इन इंग्लिश वी कॉल इट. ठीक है, मतलब ये हुआ जैसे किंग या जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हर जगह होता है, बट कैलिफेट एम्पायर में जो लीडर, ओटोमन एम्पायर का जो लीडर था उसको कहते हैं कैलिफा. कैलिफ लिखते हैं इंग्लिश में या खलीफा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड वाज, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वर्ल्ड वॉर 1. इसका ईयर देखो 1914 से 18 तक. सो वर्ल्ड वॉर 1 में ऑन वन साइड वेयर अलाइड पावर्स, देखो यूके, इंग्लैंड इधर था, यूके एंड फ्रांस, एंड जो सेंट्रल पावर में ऑपोजिट में था ओटोमन एम्पायर. ओके, इज इट क्लियर? सो दिस पार्टी वन इट वर्ल्ड वॉर 1. तो क्या हो गया? ओटोमन एम्पायर गॉट डिसमेंबर्ड, टूट गया हिस्सा. ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज, देखो ये है ओटोमन एम्पायर, ये मॉडर्न डे टर्की रीजन है और ये अरब रीजन है ना, जो जजीरतुल अरब, जिसको आप जजीरतुल अरब अकॉर्डिंग टू दे आर राइटिंग इट इन एनसीईआरटी बुक. सो यही स्टेटमेंट मैंने लिख दिया. ठीक है, अब देखो हुआ कि आफ्टर दैट दिस टर्की वाज ब्रोकन और ओटोमन एम्पायर, है ना, ओटोमन एम्पायर तो उस टाइम पर दिस गॉट ब्रोकन, मतलब स्पेशली आफ्टर 1918 व्हेन वर्ल्ड वॉर 1 वाज ओवर. तो यहां पर एक सिस्टम लाया गया था, आई होप यू आर अवेयर, इसको कहते हैं मैंडेट सिस्टम. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट. एंड दीस कंट्रीज वर ब्रोकन एंड डिवाइडेड अमंग ब्रिटिश एंड फ्रेंच. इसलिए शायद आपको पता होगा कैरो वगैरह जो सुएज कैनाल भी दे वर एक्चुअली इन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एंड ऑल, है ना, ब्रिटिश, फ्रेंच एंड ऑल. So what happened was that there was actually an anger among the Muslims in the entire world that the Ottoman Empire was destroyed. So they were unhappy with the British. Okay, ठीक है, आप समझ गए? अब देखो क्या हुआ, गांधी जी in the non-cooperation movement added the Khilafat issue, Khilafat cause. Why? Because he believed that Muslims in India would support the non-cooperation movement. Okay? Because the entire world they said, you know, this Ottoman, the British and these French have actually destroyed the Ottoman Caliphate and this should be restored back, something like that. Okay, and that is why Jaziratul Arab. This is important. Why? Because देखो यहाँ पर मक्का है, this is a Makkah and this is a Medina. These are famous religious places of Muslims. So they wanted that this region should be given back to the Ottomans and all. ठीक है, तो उसको कहते हैं खिलाफत इशू. यू गॉट इट? यस, टुगेदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू एंश्योर दैट देयर शुड बी मेजर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी आल्सो. ठीक है, सो यही है जजीरतुल अरब. तो ये एनसीईआरटी बुक का ही मैंने दिखाया, ये सारा शॉर्ट्स उसी का. ठीक है, तुर्किश सुल्तान खलीफा है ना, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट, है ना, सफिशिएंट टेरिटरी एंड ऑल. ठीक है, सो खिलाफत मूवमेंट भी एस्टैब्लिश हुआ था वही, एंड दिस वाज एक्चुअली इन लाइन, दिस खिलाफत मूवमेंट वाज एडेड in non-cooperation movement. This issue was added, and this was started by Muhammad Ali and Shaukat Ali. So that is what you should be knowing about. ठीक है, now अब देखो ये इस चैप्टर है, क्लास एनसीईआरटी बुक का ही चैप्टर है. दे आर टॉकिंग अबाउट, जब वो स्टार्ट करते हैं मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सो दे टॉक अबाउट चंपारण सत्याग्रह, मैंने पढ़ा दिया. ठीक है, टॉक अबाउट गांधी जी 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, खेदा स्ट्राइक, ये भी मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब पे. सर मक्का मदीना जेरूसलम में नहीं we got confused. Here is Jerusalem in Israel. Makkah is in Saudi Arabia.
and Medina is here in Saudi Arabia. ठीक है, ये दोनों सऊदी अरब में, and Jerusalem is in Israel और Israel Palestine border and all. ठीक है, different जगह हो. Okay, so that is what we were talking about. हाँ, तो ये मैंने बता दिया, ये सब एनसीईआरटी बुक में लिखा, बट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस चंपारण, अहमदाबाद, खेदा सत्याग्रह, दीस थिंग्स, है ना. उसके बाद क्या क्या बात हुई इस क्लास में मैंने बताया ना, रॉलेट सत्याग्रह, ये वाले में चंपारण सत्याग्रह नॉन. देन सिडनी रॉलेट वाली बात है ना, रॉलेट सत्याग्रह है ना, दैट ब्रिगेडियर दैट ही केम डायर है ना, जनरल डायर. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीस थिंग्स, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया. नाउ दे आर स्टार्टिंग विद नॉन कोऑपरेशन. अब देखो हुआ क्या, when the Ottoman Empire was destroyed, the Turkish ruler who came to power was Mustafa Kemal Atatürk, and this was actually, it is said that he was not very pro-Islam, or actually he actually did undo many things that were done previously by the Ottoman Caliphate, and that is why many Muslims were not happy with him. ठीक है, ये कमाल अतातुर्क का नाम लिखा है. After World War II, he came to power somewhere around in 1920 या 22 के आसपास. ठीक है, that is what you should know. हाँ, he brought an alternate form of secularism, right? Yes, Rishi Satyavar, very good. So ये these are the concepts you should be knowing. तो आपको आधा चैप्टर तो एनसीईआरटी का ये भी कवर हो गया. ठीक है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास, तो पूरा आपका हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का यही. ठीक है, ठीक है. So we are done with this. This I have explained. है ना, India's two major religion, है ना. So this was Gandhi ji brought this non-cooperation movement and Khilafat issue together to bring Hindu-Muslim unity, है ना. So these are the things about it. फिर और क्या क्या हुआ, whatever the things that happen in non-cooperation movement, इसको मैं थोड़ा सा explain करता हूँ, डिटेल में पढ़ता हूँ, है ना. We'll discuss it in detail. Who among the following were the main leaders in Khilafat committee? Now please tell me. Yes, very good. मोहम्मद अली एंड शौकत अली. अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया, ये भी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ, देखो यहाँ मोहम्मद अली एंड शौकत अली लिखा ना, फोर्थ लाइन. सो बी इज द राइट आंसर. एक्चुअली इनका पूरा नाम है मोहम्मद अली जौहर. सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रीजंस फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. डिसेंट अगेंस्ट ब्रिटिश पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1. देखो वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था 1914 to 18. So world war, whenever the war happens, कभी भी लॉन्ग टर्म वॉर होती है, इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या होती है? मेन थिंग इज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा, शिप्स का मूवमेंट, ट्रेन का, सब चीज का मूवमेंट. Then government starts funding more military weapons instead of buying foods and agriculture. ध्यान भटक जाता है उधर, तो उससे क्या होता है, फूड प्राइसेस बढ़ेगा, सारी चीज का दाम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा. So this is of course a problematic for common man. The next is heavy taxation. अब क्या होगा कि करती क्या ब्रिटिश? Why were they protesting in India? Because it was, they believed that British were part of it and British were ruling in India. ठीक है, that is why they formed. हाँ. So we are talking about heavy taxation. So tax, of course, इसलिए क्या होता है कि जब भी वॉर्स खत्म हुई तो अब क्या गवर्नमेंट ने टैक्स लेना और शुरू कर दिया कि अपना खर्चा निकालने के लिए. एंड बहुत सारे इंडियंस को भेजा गया था वॉर फाइट करने के लिए कि जाओ ब्रिटिश के लिए लड़ो, है ना, समथिंग लाइक दैट. सो मेनी पीपल हैड एक्चुअली डाइड इन दैट आल्सो. उनके भी बहुत सारे रिलेटिव्स वगैरह हुए. तो ऐसे ही एक नाराजगी थी. डिसेंट मतलब नाराजगी, है ना. सो पीपल, द इंडियंस वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश. दैट वाज वन रीजन. The second is Montagu-Chelmsford reform. इसके लिए तो एक सेपरेट क्लास लेना होगा. Montagu-Chelmsford reform was brought in 1919 by the British. इसी को जब लॉ पास कर दिए गए तो it is called as Government of India Act 1919. So even Indians were not happy with this because all those demands were not met. Then Rowlatt Act, I hope you are aware. इसको बाद में 1922 में रिपील कर दिया गया. बाद में later on after the non-cooperation movement got ended, है ना. But उस टाइम पर था, है ना, 1920 में the movement started. So Rowlatt Act we had already discussed in the earlier class. What was the problem with the Rowlatt Act, है ना, and why मैंने पूरा detailed video ही बनाया इस पर. And of course, and Jallianwala Bagh massacre. So people wanted justice.
those who were the oppressor, those who killed people, they should be punished. So जो इसको पंजाब wrongs ऐसे लिख दी कई बार एनसीईआरटी में, खिलाफत wrongs, पंजाब wrongs, ठीक है, खिलाफत cause, ठीक है. So ये पंजाब wrongs लिखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का one of the reason was they wanted one reason is पंजाब wrongs. तो ऐसे अगर लिखा हुआ पंजाब wrongs मतलब समझ लो they are talking about जलियांवाला बाग मैसेकर, the justice for that. Khilafat cause I've explained. Then what are the features of non-cooperation movement? तो ये तो main causes था, we have discussed causes, reasons, जो भी कह लो. Now here we are talking about the features of the non-cooperation movement. तो ऐसे कहा था by and large non-violent protest, surrender of titles. जैसे ब्रिटिश होकर के टाइटल लेते थे सर का या राजा का, समथिंग दिस टाइटल्स तो लोग वापस कर दिए कि नहीं हमको नहीं चाहिए, रखो. ऑनरी पोजीशन, किसी को कुछ मिला, मान ली कोई पुलिस में नौकरी कर रहा है उसको कुछ मेडल वगैरह मिला, समथिंग लाइक दैट, है ना. So although Indians were junior army men or policemen, इसलिए सारे सीनियर पोजीशन तो ब्रिटिश के पास होते थे, है ना. Then resignation from government position, बहुत सारे लोगों ने जॉब से रिजाइन भी कर दिया as a mark of protest that we will not do the government job under British. Boycott of foreign goods, कि we will not buy foreign goods, we will buy Indian made goods, clothes, etc. ठीक है. Boycott of elections held under ये 1935 नहीं 1919. तो भाई मॉन्टागो केम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था इसके अंडर में जो इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन टाइप, मतलब उतना बड़े लेवल का नहीं इलेक्शन था, बट यस, सो द पीपल बायकॉटेड दिस इलेक्शन आल्सो कि विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस. देन नॉन कोऑपरेशन, नाम ही है, नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि वी विल नॉट कोऑपरेट विद द पीपल, विद द गवर्नमेंट, विद द इंस्टीट्यूशन, है ना. रिफ्यूजल टू सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी, ये मैंने बता दिया. नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है. प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी मतलब वही देसी, है ना, मेड इन इंडिया. Yes, yes, कृषि सचिव, you are right कि ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाए. That is what we'll discuss, है ना. Picketing of liquor shop, because liquor से ने क्या होता था, रेवेन्यू बहुत आता ब्रिटिश को, but of course it is harmful to the society. So that is what, इसमें women's participation बहुत ahead रहता था, women's participation. Picketing बताओ तो घेराव करना, जैसे लिकर की शॉप है उसके सामने आकर के लोग खड़े हो गए as a mark of protest. Establishment, this is important, national institutions like Kashi Vidyapeeth, I think Kashi Vidyapeeth if I'm not wrong, Bihar Vidyapeeth है ना, काशी में मिलेगा, Bihar Vidyapeeth I think is in Patna, है ना. And Jamia Millia Islamia, I hope you all are aware, those who want to go to the Jamia Millia Islamia, you should know that Jamia Millia Islamia was a result of non-cooperation movement. So please remember the history of AMU and JMI is not the same, दोनों की अलग हिस्ट्री है, ठीक है. So Jamia Millia Islamia, which is in New Delhi, is a result of non-cooperation movement. I hope you all are aware of that. And ये आपको पता भी होना चाहिए. And I have just shown you that Muhammad Ali Jauhar was one of the member of Khilafat committee. So if you get a chance to visit Jamia Millia Islamia in Delhi, जो main road है Jamia Millia की, उसका नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग. This is the name of the road on which Jamia Millia is there. So originally it was established in Aligarh, but be careful, it was different from Aligarh Muslim University. ठीक है. Ideologically भी जब establish हुआ था, it was different. Then it was moved to Delhi in Karol Bagh, and then now it is in the Okhla region. ठीक है. ये पता होना चाहिए. That is what you should know. Then yes, another important feature was unity of Hindu-Muslim, jail baro andolan, and Tilak Swaraj Fund. Means Gandhi ji actually collected some fund. I hope you are aware this. Actually हुआ क्या था, 1920 में non-cooperation movement started, and उसी के आसपास उनकी death हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक. I'm sure you must have heard his name. He was from Maharashtra, है ना. So a freedom fighter from Maharashtra, तो इनका काफी नाम आता है ना. I'm sure you must have heard. If you are from Maharashtra, I'm 100% sure you must have heard. ठीक है. So that is what, तो तिलक स्वराज फंड बनाया गया ताकि लोग इसमें फंड जमा करें मूवमेंट के में, है ना. So मूवमेंट में फंड्स वगैरह की जरूरत होती है ना. So that is what the idea is. तो है ना, funds for the non-cooperation movement, a key to event in India's freedom struggle, etc. ठीक है. These are the things you should be knowing, है ना. देखो announced by Mahatma Gandhi on Tilak's first birth anniversary, अगस्त 1921 में अनाउंस किया गया. अगस्त 1920 में उनकी डेथ हो गई. बस non-cooperation movement स्टार्ट होने से जस्ट पहले उनकी डेथ हो गई. So that is why you should be knowing about these things. Who passed away on the day of non-cooperation movement? Yes. Oh, dog lover. This question was asked in a mock. Yes. So actually कहा यह गया था कि 1 अगस्त 1920 को, yes, good, जब आपने पूछ दिया तो मैं बता ही देता हूँ. 1 अगस्त
को 1920 को विल स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उसी दिन क्या वो उनकी डेथ हो गई थी। तो दैट वाज द केस, है ना। हाँ, जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल, तो जो ये बाल है ना वही थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। So if you are from Mumbai, I'm sure you must have heard there is a railway station called as लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक उन्हीं का नाम था, तो लोकमान्य तिलक के नाम पर रेलवे स्टेशन भी है। आई थिंक और भी कुछ प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स भी उनके नाम पर। देयर इज अ ट्रेन आल्सो लोकमान्य तिलक करके, ठीक है, एक्सप्रेस। खैर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो पूरे ऑल इंडिया में था कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे एक का मूवमेंट था यूनिटी मूवमेंट, ये सीतापुर बैरेज डिस्ट्रिक्ट में मदारी पासी वाज द पर्सन हु लेड दिस। ये भी वही नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर था, ठीक है। सो दिस वाज एक्चुअली लेड बाय अ पीसेंट अगेंस्ट हाई रेंट, है ना, एटसेट्रा इन दीस एरियाज, है ना। सो ऑपरेशन ऑफ ठेकेदार एटसेट्रा। Then Akali movement, I'm sure you must be aware, in Punjab. So गुरुद्वारा रिफॉर्म्स वगैरह जो स्टार्ट हुआ था वो भी 1920s में स्टार्ट हुआ। ऑल्सो एसजीपीसी जो है ना, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, was established in 1925. This organization is the one which controls or regulates all the gurudwaras in entire India, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट अकाली मूवमेंट को भी 1920s में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आसपास ही स्टार्ट हुआ था ना। दे सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ऑल, है ना, आप देख सकते हो। दैट इज व्हाट ना you should be knowing. Then similarly एक और बहुत फेमस नेम है अलारू सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश रीजन में, इज फेमस इन आंध्र प्रदेश रीजन। He led Rampa revolt and he was in the also supportive in non-cooperation movement etc. So these are famous names, है ना। तो if you are from Andhra Pradesh region you must have heard his name, ठीक है। और भी बहुत सारा था, जैसे सी राजा गोपालाचारी इन तमिलनाडु। There are other cases like PV Periyar, but later on Periyar जो थे ना ईवी रामास्वामी इनका नाम था, ईवी रामास्वामी नायकर करके ना। लेटर ऑन उन्होंने अपना 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टैब्लिश किया था। वो फेमस ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पूछा जाता है, और इस साल 100 इयर्स कंप्लीट हुआ है, सो दे कैन आस्क, ठीक है। इन्हीं का ही इज फेमसली नोन एज पेरियार, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पेरियार नेम इन केरला, लाइक पेरियार रिवर इज देयर, पेरियार यूनिवर्सिटी इज देयर, है ना। पेरियार आई थिंक नेशनल पार्क इज आल्सो देयर, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड नो। सो ये सब उसके वही जमाने में हुआ था, केरला में मोपेला रिवॉल्ट एटसेट्रा। दीस आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर स्टॉपिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सडनली। क्या हो गया था? इट इज आल्सो मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी बुक इन द सेम चैप्टर। एनीवन बताइए। चौरी चौरा डोंट माइंड इट, थोड़ा सा और को एक्सप्लेन कर सकता है, बट यू ऑल आर राइट, बोथ आर राइट। हां, लोकल कॉटन टेक्सटाइल आर गेटिंग टू एक्सपेंसिव, ठीक है, बट व्हाट वाज द मेन रीजन? हां, चौरी चौरा इन गोरखपुर, व्हाट हैपेंड? यस, यू ऑल आर राइट। देखो, गांधी जी बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉन वायलेंस। सो जहां वायलेंस हो जाता था, whenever there used to have violence, गांधी जी ब्रेक लगा देते थे। तो कभी कभी बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते थे इससे कि इतना अच्छा मूवमेंट चला था, आपने स्टॉप क्यों कर दिया सडनली। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, the reason is right, you all have written चौरी चौरा। इसमें हुआ क्या था? व्हाट हैपेंड? फरवरी 1922, गोरखपुर, ईस्ट यूपी, व्हाट हैपेंड? तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कहां पर है। दिस इज द उत्तर प्रदेश टुडे, मॉडर्न डे यूपी है ना, और यहाँ पर ईस्ट यूपी में एक जगह गोरखपुर। यस, डॉग लवर, वेरी गुड, यू हैव आंसर्ड। हां, अदरी राइट। हां, एक्चुअली यह हुआ ये कि वही जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, सो लोकल्स में या पीसेंट्स में पुलिस में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो गया कुछ, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि लोगों ने, द पीपल बर्न द एंटायर पुलिस स्टेशन वेयर 22 पीपल डाइड, एक्चुअली 22 पुलिसमैन डाइड। तो गांधी जी को लग गया कि ये तो वायलेंस हो गया, तो गांधी जी इमीडिएटली पुट द ब्रेक। तो ये इन फरवरी 2022 a group of peasants attacked and torched the police station in the hamlet, hamlet मतलब छोटा विलेज, विलेज को कहते हैं, hamlet of चौरी चौरा, now in उत्तर प्रदेश। several constables perished, है ना, मतलब बहुत सारे जो पुलिसमैन थे उनकी डेथ हो गई,
and Gandhi ji said कि this is an act of violence and we will stop it and no provocation he insisted can possibly just the brutal murder etc. and all. So basically उन्होंने एक back immediately break लगा दिया कि we are stopping the non cooperation movement. लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, होता ये है कि many people actually those who support the idea they say कि इसको कहते हैं ये वाला, this strategy of Gandhi ji was called as struggle truce struggle, STS strategy. So होता ये था कि जब 1920 कोई मूवमेंट चला तो बहुत लंबा मूवमेंट नहीं चल सकता है. If I keep on continuing the movement for many years, it is not possible. Because अगर आप बॉयकॉट कर रहे हो मान लीजिए फॉरेन गुड्स का, तो देसी गुड्स जो है उतना कॉस्टली है, ठीक है, तो बहुत दिन तक लोग नहीं ना, लोग इतने रिच नहीं ना थे. बहुत सारी चीज जैसे गवर्नमेंट जॉब ने रिजाइन कर दिया तो फिर आप कब तक खाओगे, मतलब हाउ मेनी डेज यू विल एक्चुअली सर्वाइव, है ना, यू हैव टू फाइंड सम जॉब एटसेट्रा. तो होता क्या है कि दिस इज स्ट्रेटजी, एक तरीके हो सकता पूछते हैं स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल स्ट्रेटजी, यानी कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं चलाना, बीच में ब्रेक लेना है. तो अब गांधी जी को कोई रीजन भी तो चाहिए. सो गांधी जी फाउंड दैट ओके दिस इज द बेस्ट रीजन, लोगों का मोमेंटम डाउन भी हो रहा है, वायलेंस हो गया, सो आई विल स्टॉप द मूवमेंट बाय सेइंग दैट वायलेंस हो गया इसलिए आई विल स्टॉप द मूवमेंट. आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ वायलेंस. ओके, दैट इज व्हाई ही स्टॉप द मूवमेंट. ऑल्दो मेनी पीपल एक्चुअली सम पीपल डू नॉट लाइक दिस आइडिया. बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि नहीं स्टॉप नहीं करना चाहिए था, इमीडिएटली चलते रहना चाहिए, ठीक है. सो दीस आर डिफरेंट ओपिनियंस. तो दैट इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली, है ना, दीस आर द थिंग्स. फिर उनको गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया. आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, दिस इज आल्सो मेंशन इन एनसीईआरटी बुक, ठीक है. 1922 द जज हु प्रिसाइडेड ओवर ट्रायल जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड का इन्होंने कोर्ट लिखा है एनसीईआरटी बुक में, तो ये कोर्ट आप पढ़ लेना, ठीक है, कि क्या है एंड ऑल. तो उनको 6 साल की सजा हुई. 1922 में he was arrested for 6 years he was arrested, ठीक है. that is what you should be knowing, है ना. देन फिर ये और भी बहुत कुछ हुआ, सो वी विल डिस्कस इट इन फर्दर. तो चरखा वगैरह की बात लिखी हुई है ना, लॉयन क्लॉथ, व्हाई यूज्ड टू वियर धोती चरखा. तो भाई गांधी जी धोती वगैरह क्यों पहनते थे, उसका रीजन यही था कि आप देसी इंडियन ड्रेस पहनो. दैट इज व्हाट द आइडिया इज, डू नॉट बाय इंपोर्टेड ड्रेस. So if you have to send the signal to the people that we should boycott the foreign goods, first I should wear ना, तो सबसे पहले तो खुद पहनना होगा. कृषि सचदेवा will discuss civil disobedience movement in the next class tomorrow, ठीक है. आज नॉन कॉपरेशन डिस्कस करें, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, so we'll discuss your question, है ना. खैर, तो गांधी जी सपोर्टेड चरखा वगैरह एटसेट्रा एंड ऑल. हालांकि ये बहुत दिन तक शायद नहीं भी चल पाया. देयर वर मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ दैट, सो ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ चरखा एटसेट्रा. इस एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ भी है, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज इन व्हिच ईयर गांधी जी प्रेसाइडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? 1923, 24, 26, 28. व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी फेमस. पूरे कांग्रेस के जो जितने भी सेशंस हुए उसमें सिर्फ एक ही सेशन गांधी जी ने प्रिसाइड किया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब कौन सा था, मीन ईयर आल्सो प्लीज टेल मी वेयर इट हैपेंड. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है. Today at 6 p.m. on the same YouTube channel, we'll be having a session. Last 6 months to CLAT. ठीक है. Please attend that class. This will be taken by Govind sir and Ayushi ma'am. ठीक है. So आप attend करना. If you have any question regarding it, कोई confusion होगा, कई बार लोग पूछते हैं सर कितना मॉक दे कितना नहीं दे, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा. Please do join at 6 p.m. You can ask questions, है ना, if you have any question regarding it. खैर. Yes, I've got the right answer now. Krishi Sachdeva, Siddhi, Adrija, you all right. 1924. कहाँ हुआ था? लोकेशन बताओ. लोकेशन 1924. Belgaum. Yes, Adrija, very good. Belgaum session. It is the only session where Gandhi ji participated. है ना. Belgaum actually महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे. बेलगावी भी लिखते हैं ना, गोवा है ना, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र. देखो, ये गोवा हो गया, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है ना. यहाँ पे बेलगावी या बेलगाम कहते हैं. यस, ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग,
ठीक है, तो आप जाओगे उनकी वेबसाइट पे लिखा भी दिसंबर 1924 बेलगाम होस्टेड 39 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। देखो बाल गंगाधर तिलक का ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना। ये याद रखिए, ये पूछते हैं कई बार एग्जाम में, हालांकि उस वक्त तक इनकी डेथ हो चुकी थी, है ना, बट ये इसमें लिखा हुआ है इनके बारे में, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। और ये सब एनसीईआरटी में लिखा था। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड गांधी जी's memoir into English, because originally he had written it in which language? Gujarati. memoir समझते हो ना, ऑटोबायोग्राफी, my experiment with truth, this was originally written in Gujarati language, translated by one of the PA of Gandhi ji or personal मतलब फ्रेंड कह सकते हो या जो भी कह लो, हाँ, महादेव देसाई, वेरी गुड अदित्य, हाँ। So by and large, mostly it was translated by Mahadev Desai. कुछ हिस्सा जो it is said that some chapter by Pyare Lal, but this would be the answer अगर कहीं एग्जाम में पूछा जाए, because the right hand man, हाँ, very good, yes, Mahadev Desai उनका नाम था, ठीक है। So tomorrow we'll be discussing civil disobedience movement. These are very important, please, है ना। ये जितने भी मैं हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा हूँ, these are important ones because हर साल आप देखो एक पैसेज हिस्ट्री पर आ जा रहा है, so maybe this year also they can give one more. So this is all about today's class. Do not forget to join 6 p.m. class. 6 p.m. class देखिएगा. Last 6 months to CLAT. Govind sir and Ayushi ma'am will be there. ठीक है. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.